दोबारा रीड करो. द स्टोन टर्न्ड आउट टू बी अ ड्रैगन्स एग. When it hatched, he was thrusted. है ना? Yes, ma'am. He was thrusted. लिख आगे क्या है? Thrusted a perilous new world, right? Yes, ma'am. इसमें Ma'am, right thrust answer. of perilous. हाँ, thrust a perilous. इसमें right answer would be would with a perilous new world. With perilous, thrust with a. Ma'am, what is the meaning of the sentence? Cruel world. Ma'am, the meaning of the sentence. The stone turned out to be a dragon's egg. When it hatched, it was thrusted to the perilous new world with magic and power. वो ये कहना चाहता है perilous world मतलब dynamic world. Dynamic in the sense, do you understand dynamicity? Yes, ma'am. क्या होता है? No. No. क्या? Dynamicity Ma'am, I don't know. See, वो ये कहना चाहता है कि जब ड्रैगन का एग आया, this turned out to, पहले जो स्टोन था वो ड्रैगन का अंडा था, ड्रैगन एग. जब वो हैच हुआ, जब उस वर्ल्ड में आया, वर्ल्ड ऑफ फुल रिस्क एंड डेंजर. वर्ल्ड ऑफ फुल रिस्क एंड डेंजर, ये है इसका मतलब. पेरिलियस मींस रिस्की एंड डेंजरस. ओके. विद मैजिक एंड पावर. With the help of the ancient sword and an old storyteller, the boy and his dragon succeeded in defeating an evil kingdom. यही है ना? Ma'am, there is a mistake in the second sentence also. World, magic, and power. Sorry. Word with, with. And in the upper sentence? I told you na, with a perilous world. New world with magic and power. Yes. New world with magic and power. ठीक है? Yes, ma'am. Okay. With the help of an ancient sword and an old storyteller, the boy and his dragon succeeded in defeating an evil kingdom. ठीक है? कोई दिक्कत? Yes, ma'am. चलो ठीक. No. Last class where we stopped, where we ended. Ma'am, in the fourth sentence also, fourth number question. I just saw this only. He was sent into a world of magic. Which one? Ma'am, do you have your phone? I just marked in my notebook. जो तुमने underline किया था, मैंने वो उसमें से निकाल दिए थे omissions. That's it. Ma'am, I have sent you 2, 3, 4, 5. You didn't underline questions. it. You didn't underline it. मुझे कैसे पता चलेगा उसमें Ma'am, दिक्कत I है? have underlined in the fourth sentence. You underlined how many sentences you underlined, question. right? Ma'am, I have sent you another question. Can you see that? This I only actually it's my fault. I just saw only one question that this word वाला. ये मैंने Syria वाला नहीं देखा. ठीक है? Do one thing. I'll be telling you. I'll be writing and I'll be sending a picture of it. ठीक है? And now let's don't waste the time of the class. Okay? Yes, ma'am. ये समझ में आ गया? Yes, ma'am. ठीक है. चलो लास्ट क्लास में हमने 3 एरर्स खत्म करे थे. दैट इज प्रोनाउन एंटीसीडेंट एरर. ठीक है. नाउ वी आर कमिंग टू द टॉपिक ऑफ subject object pronoun error. The next error we are going to study is subject object pronoun error. ठीक है. Can you say I love you में subject object और verb कौन सा है? I subject, love verb, you object. Okay. This is very clear. Okay. कि what is subject, what is verb, what is object. ठीक है. Now, do you understand what is subject object pronoun error का मतलब क्या है? Subject object pronoun आपको पता है क्या होते हैं?
What is subject? What are subject pronouns? I don't know. Okay. And what are object pronouns? I'll be making a list of it. You just write down object pronouns. ठीक है? इसमें subject pronouns में आता है हमारा I, they, we, you, who, he, she, it. It is a constant. Okay, it can be used in both plural, object and subject. Whereas object pronouns are me, them, us. You का you ही रहेगा. You is gender neutral. Whom, him, her, it. ठीक है? ये list बना लो. It will help you to understand what are subject pronouns and object pronouns. Understood? लिख लिया? Yes, ma'am. बढ़ू आ गया? हाँ या ना तो बोला करो. ठीक है. अब एक बात याद रखना. There is a rule, hashtag the rule, which says that subjects are only replaced with subject pronouns. Subjects are only replaced with subject pronouns. Got it? Whereas objects are only replaced with object pronoun. Got it? ये दो रूल ऐसे हाईलाइट करके लिख देना. अब now understand. I'll give you a sentence. The Malhotras invited she and he to the party. First, understand. First, just tell me what is subject, what is verb, and what is object. What is subject here? The Malhotras. The Malhotras Subject. are the subject. Okay. Whereas invited Verb. and She object and he. She and he. to the party is object. Rest of the subject के बाद subject verb को define करने के बाद जो बाकी का sentence बचता है वो हमारा क्या होता है? Object. Predicate, right? Yes. अब मुझे एक बात बताओ कि इसमें गलती क्या है? She and he. She and he. क्या है इसकी जगह? क्या यूज होगा इनकी जगह? ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या है हमारे? बड़ा ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस Him, her. यही है ना? Yes. तो the Malhotras invited her and him to the party. This is correct. Because we are only going to use object in the place of object. We are only going to use object pronoun, not the subject pronoun. Okay? This is the error. You can find it. Ma'am, what are the subject pronouns definition? Subject pronoun, they does not have any definition. It's just subject pronouns are like we, you, who, he, she. Pronouns क्या होते हैं? Which represents the noun, right? तो वो एक बहुत instead of Adishri, Vani, Shubham, Adya, Meenu, etc. we use a category of all the girls or they were she were going to the party. ठीक है ना? They were going to the party. So collectively, instead of mentioning each and every girl, can we say all the girls were doing this? They were very interested, etc., etc. ठीक है?
they does not have any definition. It's just ki in place of subject, which represents the whole sentence, where we are, which who is going to talk about the sentence, is subject pronoun. And object का definition क्या होता है? Object means the receiver of the sentence. Object का मतलब the receiver of the sentence है ना. Yes, ma'am. सब्जेक्ट जो बात कर रहे हैं सेंटेंस के बारे में, ऑब्जेक्ट जिसके जो अल्टीमेटली जिसके बारे में हो रही हो, ठीक है, ये होता है बस, और कुछ डेफिनेशन है नहीं इसकी स्पेसिफिकली. ये समझ में आया आपको? Yes, ma'am. अच्छा, अभी तक जितना मैं पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है या सब ऊपर से जा रहा है? नहीं मैम, समझ आ रही है. आपको क्या करना है, एक फीडबैक लिख के देना है मुझे ऑफ अप्रॉक्स. इट्स अ होमवर्क, आज करके देना है मुझे. ऑफ अप्रॉक्स 100 words. Click a photo and send it on the SSSI group. Feedback: how my classes are helping you. Question is how my classes, Vani ma'am's classes, are going to help you or helping you in as a subject English grammar. ठीक है? जब हमें क्लास पसंद आती है तो हम किसी के लिए फीडबैक लिख के देते हैं ना, हमें क्या क्या पसंद आया उस क्लास में, वो लिख के देना मुझे 100 वर्ड्स में, उसकी फोटो मुझे देना, मैं अपना इंग्लिश भी चेक कर लूंगी उसमें. ठीक है? डायरी राइटिंग दिखा था? Yes, ma'am. तो फोटो कौन भेजेगा? क्या मैं घर पे आके चेक करूंगी आपके? मैम अभी तो रफी में लिखा था, उसको फेयर करके अच्छे से कब भेज करोगे दूंगी. फेयर? बताओ अदिति. जब न्यू मैम ईयर आ अभी जाएगा, बस लिखूंगी. जब न्यू ईयर आ जाएगा तब करोगे फेयर. Yes, ये ma'am. 2 काम करके देने हैं मुझे. ठीक है, चलो नेक्स्ट सेंटेंस इज you and me are someday. एक्सक्यूज मी मैम, मुझे बोलना था कि वो जो ओमिटिंग जो सेंटेंसेस था उसको आप क्लासेस में डिस्कस कर सकते हो. क्लासेस मतलब अभी जो क्लास अभी चल रही थी इसमें आप डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि वो मुझे सेंटेंस समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने भेजा it's a था. mixture of आंसर्स तो है नहीं. it's a mixture of prepositions and all. अगर मैं तुम्हें ये यहाँ पे अभी नहीं करवा पाऊंगी मैं, because हम बेसिक से अभी हम pronoun errors पे हैं. There are preposition errors, there are phrase errors, there are many errors. तो वो ही पढ़ने के बाद I can take your class ना. Then only you will be able to get into the depth. जैसे जैसे क्लासेस होती जाएगी तुम अपने आप ही चीजें क्लियर होती जाएगी तुम्हारे को. नहीं मैम, बस जो क्वेश्चंस मैं भेज रही हूँ वही बस बताना था क्लास में. बताया तो था अभी, एक क्वेश्चन जो डिस्कस किया था. मैम वो वैसे तो 30-40 क्वेश्चंस है. भाई 30-40 क्वेश्चंस तो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगी. सी आई एम एब्सोल्युटली सॉरी अबाउट इट. मैं 30-40 क्वेश्चंस अपनी क्लास में डिस्कस नहीं कर सकती आदिश्य, बिकॉज मेरा कॉन्सेप्ट रहता है. द वे व्हाई यू आर टेकिंग द क्लासेस जस्ट बिकॉज टू बिल्ड द कॉन्सेप्ट. मैं क्वेश्चंस ही सॉल्व करती हूँ तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड कब करूंगी? नहीं मैम, सारे नहीं, बस एक पैराग्राफ का 2 या 3 लाइन. वैसे 30-40 नहीं, 5 to 6 क्वेश्चंस बस करना है. जो भी आपको सबसे मोस्ट डिफिकल्ट लगेगा वो मुझे बता देना, वो डिस्कस कर लेंगे क्लास में. अंडरलाइन करके भेज देना. ठीक है, ऐसा कर सकते हैं. बट 30-40 इज वे मोर डिफिकल्ट फॉर मी. इट्स लाइक यू आई कांट. You and हम me सारे are, नहीं करने थे. हाँ, you and me are someday going to see the world. See, अगर आपको अपने क्वेश्चन सॉल्व करवाने थे तो अदिश्री उसकी क्लासेस डिफरेंट होती हैं. I was supposed to ask to build your concepts, as your father told me to build your concept from the beginning. If I'll be focusing more on the questions every day, so when I'm going to complete my syllabus, it's way more difficult for a teacher to always concentrate on the questions. It's your homework. Ma'am, because my tests are coming, so the things in which I'm having doubt, I'm saying, even if I'm saying that. Listen. अभी जो तुमने क्वेश्चन भेजा था मुझे, मैंने उसको सॉल्व किया, मैंने तुम्हें भेज दिया. अब what you want the answers from me or you want the explanation from me? See, if I'll give you the explanation, I will say this error came. तुम्हें pronoun antecedent error पता था? नहीं पता था. मैं बोलूंगी pronoun antecedent error यूज हुआ था और इसमें repeat pronoun error यूज हुआ था और इसमें what should I say, इसमें
कोई भी ऐसा एरर यूज हुआ था विच इज लाइक यू डोंट नो अबाउट इट. तो और इसमें रिलेटिव प्रोनाउंस यूज हुए थे. हाउ यू गोना नो कि भाई ये क्या चीज है. Ma'am, then my tests are coming, then how will I perform in it? यू ओनली टेल मी. मैंने तुम्हें दोनों पर्सपेक्टिव बताए. यू ओनली टेल मी. मैं तुम्हें ऐसे ऐसे वर्ड्स बताऊंगी, देन यू आर गोइंग टू से मैम व्हाट इज दिस. फिर मुझे वो क्लास लेनी पड़ेगी, फिर मुझे वो पूरी चीज समझानी पड़ेगी. हाउ इज गोना हेल्प मी. मैं तुम्हें क्वेश्चन के सॉल्यूशंस और उसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ. यार दिस हैपेंड. तुम्हें विद के साथ ए यूज करना है बिकॉज इट्स अ प्रेपोजिशन. इट्स जॉइनिंग द सब्जेक्ट. इट्स जॉइनिंग द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टुगेदर. ये मैं तुम्हें बताती हूँ. बट जैसे मान लो कि एक ऐसा वर्ड आया, रिलेटिव प्रोनाउंस यूज हो रहे हैं अधिश्री पे. नाउ यू विल से मैम रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं. आई नेवर स्टडीड अबाउट इट. दैट मेक्स सेंस राइट. Yes, ma'am. अच्छा एक बात बताओ. Ma'am, but most of these sentences, I didn't understand the sentence. That's why I'm not able to You don't omit understand the. because you don't understand the sentence. That's the only problem you are facing. You have basic knowledge of English grammar. See, whatever I have seen in you, you have basic knowledge of English grammar, but the only thing is you don't understand the words. ठीक है. जैसे perilous world हो गया. अब generally I'll give you a technique. गूगल जाओ, उसका वर्ड का मीनिंग समझो, एंड देन कम टू द वर्ड, ट्राई टू जॉइन इट एंड देन फाइंड इट हाउ इट्स गोना हेल्प. मेरे को भी ऐसे तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं अदिश्री जो मुझे नहीं आते, लेकिन व्हाट आई डू, आई गो टू द गूगल, आई फाइंड आउट द मीनिंग एंड देन ट्राई टू इनकलकेट इन द सेंटेंस, देन आई मेक अ सेंटेंस. तो ऐसे करके देखो. अगर नहीं आता तब भी देन यू आस्क मी. ठीक है. अब इतने कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स इंग्लिश सेंटेंस होते हैं. जनरली ऐसा होता है हर किसी को उसका मतलब नहीं आता. It's like when you practice more of the questions, you get to know, हाँ this is the pattern of the question. ऐसे ही होगा ये. मतलब ये यही कहना चाहता है सेंटेंस में. अब जैसे ऊपर लिखा था कि वो एक, जैसे वो अंडा हैच हुआ, अंडा दुनिया में आया, तो उसने देखा कि पेरिलियस वर्ल्ड है. या तो पेरिलियस वर्ल्ड डायनामिक वर्ल्ड हो सकता है, या फिर क्रूअल वर्ल्ड हो सकता है, या फिर जैसे मैंने बोला रिस्की एंड डेंजरस वर्ल्ड हो सकता है. तो ऐसे कोरिलेट करके देखो ये क्या कहना चाहता है आगे सेंटेंस में. हर किसी का मान लो कि गूगल नहीं है हमारे एग्जाम में, देन व्हाट विल डू. तो ऐसे एक्सपेक्टेशंस लगाओ कि कौन सा वर्ड क्या मीनिंग करेगा आगे का सेंटेंस. देखो नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव वर्ड होगा, पॉजिटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव वर्ड होगा. ठीक है. जब मैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने जाती हूँ, देयर आर लॉन्ग पैराग्राफ्स. उन लॉन्ग पैराग्राफ्स में एरर्स और ओमिशंस ही होते हैं. ठीक है. देयर आर n नंबर ऑफ वर्ड्स आई कुडंट अंडरस्टैंड कि भाई वो कहना क्या चाहता है. लेकिन व्हेन आई रीड द पैराग्राफ आई अंडरस्टैंड कि ये नेगेटिव बातें कर रहा है, तो वो पॉजिटिव वर्ड तो होगा नहीं. अगर वो पॉजिटिव बातें कर रहा है तो वो पॉजिटिव वर्ड नहीं होगा. ठीक है ना. ऐसे यू कैन ट्राई टू हैव द एक्सपेक्टेशन. सी व्हेन यू एक्सपेक्ट, there are chances, 50% chances of being right and 50% chances of being wrong. ठीक है ना. लेकिन if you practice more of the question, you will able to understand, your vocab will increase day by day. ठीक है. कुछ आया है पल्ले या फिर एक लेक्चर लगा. नहीं मैम, समझ आ गया. My classes are helping you or not? Yes ma'am. Because तुम्हारे एक्सप्रेशन से मुझे इतनी जल्दी पता नहीं चलता कि the classes are helping you or not. You have to be very communicating to me. You know, communication helps a person to know how the सामने वाला person is going to have. If you are just only talking about the studies to me, how I am going to predict you what Adishri wants? You are the only student in my entire batch or in my entire journey who do not communicates with me. मुझे अपने सारे बच्चों को पता है कि ये लूप होल इसमें होगा, कि ये इसमें मुझे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, इसमें मुझे कम ध्यान देना पड़ेगा. एंड इन योर केस आई एम अ जनरल न्यूट्रल प्रोनाउन. मुझे ये नहीं पता which thing is going to focus for you more. So you need to communicate me as a person, as your teacher, as your mentor. इसीलिए मैं बोलती हूँ communication is very necessary. You don't ask anything about my life. I only ask you, have you ate your dinner? Have you ate your lunch? Have you ate your breakfast? Only I ask you questions. You just say yes or no. You don't know me as a Yes, teacher. Many of my students know how I am a teacher. 2 दिन हुए एक बच्चे को क्लास लेते हुए मुझसे, and she is very very comfortable with me. She tells, हाँ मैम ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, everything. You need to come up with.
दैट्स वेरी नेसेसरी. अब बताओ चलो इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है? You and me are someday going to see. व्हाट? 1 second, ma'am. आराम से पहले ये बताओ ये सेंटेंस सही है या गलत है? क्या इसमें कोई एरर है या नहीं है? बोलो बाबा. Yes, ma'am. है. क्या है? नहीं पता चल रहा. एरर है लेकिन पता नहीं चल रहा. See, 99% on this planet Earth, 99% are okay with wrong English. Wrong English. You know why? Because they don't want to revolutionize the language. They are okay with the wrong English. So am I. So am I in the sense, if somebody is talking to me, you and me are someday going to see the world. Yes, it's correct for me, right? Obviously, अगर हम किसी से normal conversation करेंगे, you and me are going to someday going to see the trade fair one day. Okay, you and me are going to see the Ladakh one day. ठीक बोल रही हूँ ना मैं? तुम और मैं, सही है ना? Yes, ma'am. लेकिन मैं जब तुमसे पूछती हूँ, you and me are the subject, and subjects are replaced only with subject pronoun. Rule says this. Rule says subject. Hello. Hello. Ma'am, your voice is not coming. अब आ रही है? हेलो हेलो. Hello. यस, आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? हेलो 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 हेलो. हेलो Hello. दूसरी आवाज आ रहा है? Yes, ma'am. I think there was a problem from your end, from your side. दूसरी सुनाई दे रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, there was a sentence you and me, we were stuck here, right? अब हमें सब्जेक्ट प्रोनाउन रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट विल ओनली रिप्लेस विद सब्जेक्ट प्रोनाउन, एंड सब्जेक्ट प्रोनाउंस आर, what are subject pronouns? I,
they, we, you, who, he, she. And ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है? मी. यहाँ पे क्या हो रहा है? सब्जेक्ट प्रोनाउन की जगह ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज हो रहा है. So it is like that. You and I are someday going to see the world. ये हो सकता है? Is this correct? Yes, ma'am. क्योंकि यहाँ पे क्या यूज हो रहा था हमारा? Which is an object pronoun. ठीक है? Ma'am, I me. Me था ना सेंटेंस में. Yes, ma'am. इसको रिप्लेस करेंगे हम I से. That is the error. Okay. Subject pronoun error. ठीक है? You and me are subject pronoun, but we should be replaced with I because subjects are only replaced with subject pronoun. ठीक है? Yes, ma'am. I should give you a sentence. He is much more qualified than her. Is this sentence correct? Can you see one thing? Can you see one thing here? You might be thinking, what is the subject pronoun doing at the end of the sentence? What is it doing at the end of the sentence? It should be at the beginning. Generally, subject pronouns are the beginning of the sentence. What is it doing at the end of the sentence? One thing you have to notice here, there is a fact that whenever there is no action, mic band kar do yaar. Whenever there is no action in the sense there is no verb, it means there is no object. जब एक्शन ही नहीं है तो रिसीवर ऑफ द सेंटेंस कौन होगा? जो एक्शन ही नहीं है तो रिसीवर ऑफ द सेंटेंस होगा कौन? मुझे पता चलेगा. Yes, ma'am. क्या हम कुछ बोल रहे हैं, कुछ एक्शन हो रहा है तभी तो रिसीव हो रहा है. एक्शन ही नहीं है तो रिसीव कहाँ से होगा? ये फैक्ट याद रखना. whenever there is no action, whenever there is no verb, there is no object. ठीक है? Can you give an example? हाँ? Can you give an example? Yeah, I'm giving an example. Just इस पूरे सेंटेंस में verb है कहीं? Do you find any verb in the above sentence? Ma'am, qualified. I agree. You think qualified? Qualified is a verb. Just tell me, he is much more qualified than her. क्या ये qualified इस बंदे को affect कर रहा है? क्या इस lady को affect कर रहा है? क्या ये qualified इस बंदी को affect कर रहा है? Ma'am, affect in the sense? He is much more qualified. Comparison. क्या ये comparison में use हो रहा है? Yes, ma'am. कैसे? Yes. कैसे आप मुझे बता दो. Ma'am, कंपैरिजन में तो मच मोर यूज हो रहा है ना. कंपैरिजन में क्वालिफाइड थोड़ी यूज हो रहा है. कंपैरिजन में तो मच मोर यूज हो रहा है. यू आर एज गुड एज मी. मैम जब गुड लगेगा ही नहीं तो फिर एज का फिर क्या यूज? मुझे यहाँ पे ये बताओ कि here qualified is doing nothing on me in the sense this lady. Qualifying this lady से क्या लेना देना है? कोई लेना देना है?
He's talking about him and how this lady is connected to it. It's doing nothing on her, right? Yes, It's doing nothing as you are as young as I. In the sense, you are young as me. So how your youngness is going to affect me? You are younger than me. How your youngness is going to affect me? See, here qualified is doing nothing on me. So it's not a verb. Whenever any action is going to hit me, that's why we called it as action, na? A verb. समझ में आ रहा है? yes, या अभी टाइम पास चल रहा है? नहीं, Yes. जब यहाँ पे कोई वर्ब भी नहीं है, किसी को इफेक्ट ही नहीं हो रहा कुछ, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी नहीं है. नहीं, ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है. हाँ. अब मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ. कैन आई कंपेयर अ सब्जेक्ट विद अ सब्जेक्ट? मैम, कैन यू रिपीट? Can I compare? Can in English, can we compare a subject with a subject? Yes. Yes, we can. This is a basic sense, right? You and I can compare each other, right? You, Adishri, is young as I, right? So is that clear to you? तो यहाँ पे आना क्या चाहिए? यहाँ पे आना क्या चाहिए? He is much more qualified than She. she. Exactly. Yes, correct. Very right. ठीक है? चलो. Next example I should give you. Adishri is as young as me. Is it correct? Is young as I. अभी तुमने किसी अपने दोस्त को सुनते हुए सुना है कि वो मी की जगह आई यूज करता है? कभी नहीं सुना होगा. इवन आई नेवर हर्ड कि somebody saying Adishri is as young as me. मेरे को कोई भी जिसने ये प्रोनाउंस एरर नहीं पढ़ा हो उसको ये सही लगेगा. जनरली हम ऐसे ही बोलते हैं. जनरली 99% ऑफ पीपल अराउंड मी स्पीकिंग रॉन्ग इंग्लिश, है ना? And they're okay with the wrong English point of view. So I am also okay with it. We don't have to revolutionize the English language, as I told you. Yes, Just remember it's for the paper. It's not me, it's I. Okay? yes, ma'am. ऐसे कभी सुना है? Mama asked who is at the door. Mummy asked who is at the door. Now how are you going to give the answer? I am at the door. I am at the door. You're going to say it's me or it's I. It's me. Me? हाँ. अभी मैंने क्या बताया? Mama asked who is at the door. Do this sentence has any verb? There is no verb. There is no object. Okay. And now I can compare subject with the subject. So Yes. can I say it's I rather than it's me? Most of the people in this planet say it's me, mom. It's me. US English ज़्यादा use करते हैं, it's me. But actually the correct English is it's I, mom. I. Okay. Yes. अब तुम किसी को बोलोगे, oh, you know it's I. The other person will say, oh, shut up, Adishri, you don't know English. I know English better than you. Then you will say, oh, come on, shut up. Okay, I have learned pronoun errors. So just don't even talk about a single thing because I know you better. Then he will say, oh, huh, you studied well, right? Who gonna tell you that it's correct? Everybody around me are going to say it's me, mom. So it's I. Okay. जनरली ये इंग्लिश जो हम इवॉल्व करते हैं ना, ये यूएस की सीरीज ज्यादा देखते हैं. नेटफ्लिक्स पे बहुत यूएस सीरीज है, लाइक स्क्विड गेम्स, 13 रीजंस व्हाई. बहुत सारी इंग्लिश यूएस वाली नेटफ्लिक्स सीरीज है जिसमें यूएस से वाली लैंग्वेज, अमेरिकन इंग्लिश ज्यादा यूज करी जाती है.
So it's gonna, it's wanna, it's okay, wanna meet, wanna hang out. ये wanna और gonna बहुत चलता है, ठीक है? So this is not the correct language. Even I use, because I watch so much of English, American English, series. So I have a problem with it. Spare me, because I use almost wanna, gonna, all these abbreviations. Okay. So next is when you say, "Oh my God, it's always been her." कभी ये सुना है किसी अपने दोस्त को ये बोलते हुए, "It's always been her." सिर्फ वही लड़की से मैं प्यार करता था। क्या इंग्लिश सेंटेंस करेक्ट है? No. What is the problem here? It's always hers. हाँ? पहली बात है, इस पर कोई वर्ब है? नहीं. सब्जेक्ट एट द एंड है? Yes, ma'am. सब्जेक्ट एट द एंड है? Ma'am, your voice is not clear. I think there is a problem in my internet today. It's always been her. Her is at the last. Subject is doing at the last. What is subject doing at the last? It means there is no object. It means there is no action. Adishri? Yes, ma'am. सुनाई दे रहा है? Can you hear me? Yes, ma'am. Yeah, it's always been she. Okay? ये जो बोलते हैं ना, it's always been her, गलत बोलते हैं। क्या करें, गलत लोगों के साथ है, गलत इंग्लिश बोलते हैं वो, ठीक है ना? But you don't just remember it for the paper, okay? Okay. There is a last sentence. Tell me what is wrong with it. The shopkeeper who or whom you talked about is rude. इस सेंटेंस का हिंदी में मतलब बता सकते हो? जिस शॉपकीपर के बारे में तुमने बताया था वो खड़ूस है। वो खड़ूस है। वेरी नाइस। अब इस सेंटेंस में मुझे ये बताओ, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है? नहीं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बट हाँ है। सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? हाँ। ठीक है। अब मुझे बताओ इस सेंटेंस में हु लगेगा या हुम लगेगा? हाँ, हुम। ये हाँ। क्यों लगेगा? हम ऐसा बोलते थे सब। ऐसे बोलते हैं तो मैं भी बोल देती हूँ, है ना? ऐसे नहीं होता। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? I don't know. ट्राई ना, एटलीस्ट ट्राई। सब चीज मैं बता दूंगी तो तुम अपना दिमाग कब चलाओगे? मेरे बताने के बाद? हम तो रीजन कैसे पता चलेगा? आप बताओ कि क्यों हम हुम यूज करते हैं, हु क्यों नहीं यूज करते हैं? ये सेंटेंस किसके बारे में बात करना चाह रहा है? शॉपकीपर के बारे में। मतलब हम शॉपकीपर के बारे में बात कर रहे हैं। हमने सब्जेक्ट भी डिफाइन कर दिया, हमने वर्ब भी डिफाइन कर दिया और हमने ऑब्जेक्ट भी डिफाइन कर दिया। जब इस सेंटेंस में तीनों हैं तो ऑब्जेक्ट के बदले ऑब्जेक्ट प्रोनाउन से तो यूज होंगे। We are talking about the receiver of the action, na? We are talking about him, the shopkeeper. We are talking about the shopkeeper, right? नहीं समझ आया। That the shopkeeper who or whom you talked about is rude.
You talked about, किसके बारे में बात की हमने? Receiver of the action कौन है? शॉपकीपर। शॉपकीपर। अब एक बात बताओ, जब ऑब्जेक्ट शॉपकीपर है तो ऑब्जेक्ट को रिप्लेस किससे करेंगे? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन से ना। एंड whom is the object pronoun? ये तो बात बताना था बस। अच्छा, इसके नीचे लिखो, ये सेंटेंस लिखो और इसके नीचे लिखो, here we will use whom because we are talking about the receiver, which is the shopkeeper. we are talking About the receiver, the shopkeeper, receiver of the object or action, hashtag the shopkeeper. Okay. Acha, Adishri, now I am going to start. I want to complete 2-3 errors more, which will take time. Ma'am, whom is a subject object pronoun? Who is a subject pronoun? Whom is the object pronoun? Who is a subject pronoun? क्या हो गया दिश्री? अब ठीक है, आज दिमाग से नहीं चल रहा है भाई तुम्हारा। स्टार्टिंग में तो लिखवाया है। Who is a subject pronoun? Whom is a subject object pronoun? What happened to you? Are you in today's world or not? क्या हुआ? सब ठीक है घर में? हाँ। लग तो नहीं रहा। Very careless about it. Acha, what I want to say you is my internet connection is not so good as well. I want to complete repeat pronoun error. The errors of gender neutral pronouns के error में बताना था, it versus it के बारे में बताना था, relative pronoun के बारे में बताना था। तो ये काफी लंबा चलेगा, मतलब it takes one more class as well. And my internet connection is also not so good today. So I am stopping the class. If you want to anything you want to discuss, you can tell. Ma'am, the omission. हाँ यार, omission के लिए मेरे पास मोबाइल होना चाहिए ना। मेरे को खुद पहले वो क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, ऐसे तो मैं तुम्हारे को साथ साथ बता दूंगी। ठीक है, मैं हर एक टॉपिक के साथ क्वेश्चन तो कराती हूँ ना। Yes, ma'am. तुम अपने घर पे जाके प्रैक्टिस करते हो, ये बताओ। Yes, ma'am. That's good. So, anything you want to discuss? No. No? Still no? Why you don't want to discuss with me? You have a problem with me? क्वेश्चन के अलावा भी कुछ डिस्कशन होता है जिंदगी में, वो है तुम्हारे पास करने के लिए? नहीं। क्यों? I asked your father to have a discussion, asked Adishri to have a discussion with me every time, but she always resists herself not to have a discussion with me. Why so? Why you don't want to discuss? You always ask, what is your debate topic? Have you tried to write something on it? मुझे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताने की बात की, कोई आर्टिकल पढ़ा, मुझे बताओ क्या आर्टिकल पढ़ा, कुछ पढ़ा? नहीं, अभी तो क्यों नहीं पढ़ा? कोई मूवी देखी? नहीं। नहीं। फिर क्या किया? मैम, मैथ्स ही बता दो, कुछ क्या मैथ्स किया? रेशनल इनइक्वालिटी। रैशनल इनइक्वालिटी क्या पढ़ा? रैशनल इनइक्वालिटी के बारे में मैम, हाउ टू देयर ऑफ 3 मतलब लीनियर इक्वालिटीज की 3-4 What is टाइप्स। linear inequality? What is linear? What do you mean by linear inequality? Linear equality means Inequality inequality in
which the equation does not have an equal sign, it have a greater than or lesser than sign. Okay. What does it mean by linear? The variable whose power is 1 or degree is 1. What is the graph of linear equations? How linear equations are drawn? Ma'am, in a straight line. Which axis? Is it a 45-degree line or not? Yes, ma'am. Is it a 45-degree line or not? Does a linear equation can become a 45-degree line or not? Yes, ma'am, it can become. How? Give an equation of linear equation. Give any example of linear equation. मैम अभी ग्राफ तो पूरा हुआ नहीं है बस कोई भी एक equation दो which shows that the equation is linear equation. 2x plus 3y is equal to 5. Can y is equals to x be a linear equation? No, ma'am, it is a linear equation in two variable. Can y is equals to x be a linear equation? Yes. Yes. चलो, yeah, you studied well. चलो, आज क्लास खत्म करते हैं. Bye bye. Bye.